Good morning, students. This is our first class of Science 1 or the General Science. We can say Science and Technology in your classroom. Okay. Now, you don't aware about me. I am the Rajesh Chadhav sir. Particularly, I have the two subjects, that is the Science and Technology, Science 1 and Science 2, and after then the Maths. Okay. Now, this is the first interaction, live interaction between us, so that we will particularly trying to take some live classes to complete your syllabus. Just particularly as earlier, I was sent you some videos about the Science 1. So many chapters are covered in that particularly videos. Currently, we have the chapter that is substances in everyday use. Okay, so generally I was sent you some videos about that topics. Now right from today we going to take the live classes for the another chapters. Just like we started with the first chapter for the live class, that is the heredity and variation. Okay, all right. Now the particularly in this chapter what happens, or in this chapter what particularly we have to study, we have to learn. So generally it is very basic or the important thing, that is the inheritance. What is the inheritance? Inheritance means what? So simply we can say inheritance having the two sub main branches, that is the heredity and second is the variation, as this is the name of your chapter, that is heredity and variation. Okay, but the inheritance is particularly taking place the branch, that is the genetics. Now what is the genetics before that? Genetics means what? You know that what is meaning by the biology. Science having the three subfields or the sub particularly branches, that is chemistry, physics and biology. Okay, in your particular syllabus. So simply this is the particular part of biology. So that what is the genetics? The genetics means it is a branch of biology in which the study of the particular gene, एखादा पर्टिकुलर जीन का स्टडी करना, एखादे पर्टिकुलर जीन का स्टडी करना जिस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ साइंस में होता है उसको बोला जाता है जेनेटिक्स. ओके, अब सिर्फ जीन्स की स्टडी करना नहीं होता है. व्हाट इज द पर्टिकुलरली स्टडी ऑफ जीन्स? नाउ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दैट जीन इन आवर बॉडी, इन आवर सेल, इन नॉट ओनली आवर सेल बट ऑल काइंड ऑफ द ऑर्गेनिज्म. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में जो जीन्स का इंपॉर्टेंस होता है, क्या काम करता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट जीन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट जीन इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, दैट होल स्टडी इज पर्टिकुलरली स्टडीड इन द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स. उसे बोला जाता है जेनेटिक्स. ओके, नाउ व्हाट इज द इनहेरिटेंस? तो जनरली इनहेरिटेंस में सभी चीजें स्टडी की जाती है. दीज आर particularly we can say these are the characteristics which are transformed from parents to offspring. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफर होते हैं उस ट्रांसफॉर्मेशन का स्टडी करना, स्टडी ऑफ द जीन पर्टिकुलर जीन का स्टडी करना, ये जो दो थिंग्स होती है, दैट टू थिंग्स स्टडी इज पर्टिकुलरली हैपन इन द इनहेरिटेंस. ओके, सो दैट इनहेरिटेंस मींस सिंपली इट इज द टाइप ऑफ जेनेटिक्स. नाउ दिस इनहेरिटेंस इज पर्टिकुलरली सब डिवाइडेड इनटू द टू पर्टिकुलर थिंग्स. One is the heredity and second is the variation. Now what happen in the heredity and variation? Heredity means क्या होता है? What is the variation? Variation का मतलब क्या होता है? तो simply heredity हम उसे बोलते हैं. Now these are the characters which are transferred from parents to their offsprings. This transformation of characteristic is called as the heredity. उसे बोला जाता है हेरिडिटी. ओके, नाउ व्हाट इज द वेरिएशन? वेरिएशन किसे बोलेंगे? एक सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं. जैसे आपके पेरेंट है, आपके पेरेंट से आप लोग हो, मतलब आप है, आपका भाई है या बहन है, वॉट एवर भी, जो कुछ भी है. तो ये जो हम देखते हैं कि हम दोनों भाई बहनों में बहुत सारे चीजों में डिफरेंसेस है. जैसे एक आधे की हाइट ज्यादा होंगी, एक की हाइट कम होगी, एक गोरा होगा, एक सावला होगा, समथिंग. ठीक है, एक फैट होगा, एक मोटा होगा, एक थोड़ा सा पतला होगा, या फिर और कुछ हो सकता है. तो ये जो पर्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक्स में हमको डिफरेंसेस दिखते हैं, दोनों ऑप्शन एक ही पेरेंट्स के, हमारे माँ बाप से हम और हमारा भाई हुआ है, हमारी बहन हुई, लेकिन दोनों में जो डिफरेंसेस हमको दिखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स में, मार्फोलॉजिकल डिफरेंसेस जो दिखते हैं, उस डिफरेंसेस को ही बोला जाता है वेरिएशन. तो वेरिएशन का मतलब होता है दीज आर द डिसिमिलरिटीज और द डिफरेंसेस ऑफ द external characteristics of the organism which is produced by the same parent is called as variation. उसे बोला जाता है वेरिएशन. एक ही स्पेसिस के एक ही पेरेंट से ऑब्टेन दो ऑफस्प्रिंग में जो डिफरेंसेस हमको दिखते हैं कैरेक्टर के, उसे बोलेंगे हम दैट इज कॉल्ड एज वेरिएशन. ऑलराइट,
All right, now this is the variation. Now the another thing, the heredity and variation. Now इन दोनों चीज के लिए एक important thing हमारे पास होती है, that is the DNA. Now you know that the structure of cell. In the cell there is the nucleus, and inside the nucleus there is a nucleoplasm. The fluid present inside the nucleus is called as nucleoplasm. In that nucleoplasm there is the DNA and protein. Now DNA is the basic structure of the inheritance. Inheritance के लिए सबसे basic structure जो होता है, that is called as DNA. And you know that what is the structure of DNA? Last year you studied, I think so, you particularly studied that structure. So all right, now this is the DNA, and second there is the chromosomes, and after them there are the genes. Now all these three structures which are present inside the nucleus, all these are having, particularly all these are the parts of the single thing, that is the DNA. Now the DNA का structure हम next period में पढ़ेंगे. Before that, the segment of DNA is called as chromosome. उसे ही बोला जाता है chromosome. एक टुकड़ा DNA का, that is called as chromosome, and the smallest segment of the DNA is called as a gene. और उसका ही सबसे छोटा जो पार्ट होता है, that is called as gene. Okay, so that the genes are the lakhs in number which are present on the chromosome, and chromosomes are the segment of DNA, and DNA is present inside the nucleus. Okay, what happened there? What is the importance of these, all these things, that is the DNA, chromosome or the genes, all these having the particularly the information or the decoding information for the protein synthesis. हमारे बॉडी में इनका क्या particularly मतलब है? तो simply they are the very important structure to produce the protein molecules inside the body. And you know that the proteins are the building blocks. These are the building blocks of our body. हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जो कैरेक्टर्स हमारे बॉडी में अराइज होते हैं, वो सभी कैरेक्टर्स या जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तैयार होते हैं, दिस इज ड्यू टू द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, एंड दीज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड विदिन द सेल, विदिन आवर सेल, by these three basic particularly parts, that is the DNA, chromosomes and genes. Genes are the very important. These are the smallest structural and functional unit of DNA, so that all these functions which carries from our parent to us are particularly happen due to these genes. So that this is the very importance of the genes for the life, for the living organism. Okay, in next period we will see the actual structure of DNA molecule, where is the chromosome and where is the genes, and what is the process particularly to produce the protein molecule. Okay, thank you very much.